Respected principal, honorable teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today I am presenting a speech on the topic of 14 August Independence Day. एक देश जो मुझको प्यारा है, जो मेरा एक सहारा है। एक देश जो मुझको प्यारा है, जो मेरा एक सहारा है। एक सब्ज हिलाली परचम है और इस पे चांद और तारा है। जिंदा हैं हम इसके दम से, इसने हमको संवारा है। जिंदा हैं हम इसके दम से, इसने हमको संवारा है। एक सब्ज हिलाली परचम है और इस पे चांद और तारा है। Every Pakistani has an everlasting reflection of Independence Day in his heart. Nobody can forget those sacrifices which were undertaken by the Muslims of subcontinent. They started their struggle a long time ago when the फर्स्ट पर्सन थॉट अबाउट द सन ऑफ फ्रीडम। हकीकत एक है हर शय की खाकी हो के नूरी हो। हकीकत एक है कि हर शय की खाकी हो के नूरी हो। रहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रा का दिल चीरे। Two nations theory cleared the vital concept that the creation of a separate homeland for the Muslims of subcontinent was indispensable. The dream was presented by Dr. Allama Muhammad Iqbal. Let me say that a grey portrait was cast by the author of Pakistan, which was colored with thick blood by the Muslims of subcontinent. ये देश है कमाल का, ये कायद और इकबाल का। ये देश है कमाल का, ये कायद और इकबाल का। ये धरती सोनी न्यारी है जो मुझको जान से प्यारी है। ये हासिल है अरमानों का सब बूढ़ों और जवानों का। ये हासिल है अरमानों का सब बूढ़ों और जवानों का। ये रहमत रब्बे तआला की, ये बरकत ज़ाते आला की। Dear friends, every person participated in that fight for freedom in his own way. The old meditated and prayed. The young participated with the power and force. The ladies fully supported their gents. The girls lost their chastity, and even the children also presented their innocent lives in the way of a separate and independent homeland. वो वक्त खुदा भी लाएगा, वो वक्त खुदा भी लाएगा, वो दौर यकीनन आएगा, जब बुत गिराए जाएंगे, जब अहद निभाए जाएंगे. Dear friends, the loam got the green seeds in red color, the land received the water in red color, and the whole atmosphere resounded with the unique passion of freedom and nothing else. खूने जिगर देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। खूने जिगर देके निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। A slogan was raised. We want freedom. We want a separate state. And we want nothing except Pakistan. Each darkness has a light, each night has a morning, each barbarity has a solution, each journey has a destination, and each movement has its climax. The Muslims of subcontinent under the leadership of Qaid Azam fought day and night. They said and they did the and they moved. They proved then the proof that. उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है. Dear friends, the day came when the Muslim got the result of their struggle and Pakistan appeared on the man of the world. The country has been achieved with an passion and sacrifice, so this is the noble duty of young generation to take care the independence of this country. Thank you very much.